So previous classes example number 6 completed. Now start exercise 12.2. Exercise 12.2. So question number 1. Question number 1 is a park in the shape of a quadrilateral ABCD has angle C is equal to 90 degree. A park in the shape of a quadrilateral ABCD. So draw figure quadrilateral ABCD in which angle C is equal to 90 degree. Suppose this angle C is 90 degree. A, B, C and D, angle C is 90 and given AB is equal to 9, AB given 9 and BC given 12, BC is 12 and CD given 5, CD is 5 and AD is 8. How much area does it occupy? That is, find the area of quadrilateral ABCD. आप चैप्टर पढ़ रहे हो हीरोन्स फार्मूला एंड हीरोन्स फार्मूला यूज्ड इन ए ट्रायंगल. यहाँ पे कोई ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, तो आप डायगोनल को ज्वाइन कर दो, फॉर्म से ट्रायंगल बनाना है. सो टू ज्वाइन डायगोनल BD, यदि आप डायगोनल BD को ज्वाइन कर देंगे तो देर आर टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड. So find area of two triangle and then add of these two triangle, then combined area is whole quadrilateral ABCD. So now find area of triangle ABD, then area BCD. So first find area of BCD. Since triangle BCD is a right angle triangle, so what is the area of a right angle triangle? Half base into height. Area of right angle triangle BCD. What is area of triangle BCD? Half base into height. So area of right angle triangle is half. What is base? BC into height. What is height? CD. Half BC into CD. Put all the values. So is equal to half. What is the value of BC? 12 and the value of CD is 5. So cut कर दें इसे. That is 6 is equal to 30. What is the unit? Centimeter or meter? Unit is meter. So area of triangle BCD is 30 meter square. जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल होगा वहाँ पर आप क्या करोगे? हाफ बेस इंटू हाइट का यूज करोगे. ट्रायंगल ABD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल? नो एनी एंगल 90 डिग्री. तो आप इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे? ऑल साइड गिवन. इन ट्रायंगल ABD is BD is not given. Triangle ABD side BD is not given. So first find the value of length of side BD. For BD in same triangle BCD, since BCD is a right angle triangle, so in right angle triangle BCD, by Pythagoras theorem, since H square is equal to P square plus B square, this is a Pythagoras theorem. Pythagoras theorem किस ट्रायंगल में यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में. So what is the value of H? H for hypotenuse. What is hypotenuse? BD. So BD square and P perpendicular. What is perpendicular? CD and base
BC. So BC square. Put all the values. So CD, what is CD? CD is equal to 5. So 5 square, and BC 12. So 12 square, and 5 square is equal to 25, and 12 square 144. Now add these two terms. So 169. This is the value of BD. So now find, this is the value of BD square, not BD, BD square. So find BD, square कर दो right side. So therefore BD is equal to what? Square root of 169. स्क्वायर को हटाएंगे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट. एंड स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13. सो साइड BD इज 13. ऑल साइड फाइंड हो गया है. नाउ इन ट्रायंगल ABD, now in triangle ABD, use Heron's formula because all sides are given. So use Heron's formula. So first find S. S, that is semi-perimeter. What is semi-perimeter? A plus B plus C by 2. This is a formula of semi-perimeter. So semi-perimeter A, what is A? Suppose first side A, suppose BD, that is 13, second side 9, third 8 by 2. सबको सम कर दिए. नाउ सम करें. 21, 9, 30. सो 30 बाई 2 दैट इज 15. ये 30 होगा ना. 22 प्लस 8, 30 बाई 2 दैट इज 15. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ S. यह S की वैल्यू आ गया. नाउ फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. So use Heron's formula and find area of triangle ABD. So area of triangle ABD, what is formula? Square root S into S minus A into S minus B into S minus C. Put all the values. So square root S, what is S? 15 into 15 minus A, that is 13, into 15 minus B, that is 9, into 15 minus C that is 8. ये सबट्रैक्ट कर दिए. So this equal to 15 minus 13, that is 2, 15 minus 9, that is 6, 15 minus 8, that is 7. Now split this term and to make a perfect square number. Split करके perfect square बनाना है number. So this 15 can retain 3 into 5. No any perfect square number, but other factor 3 मिलेंगे, मिल करके perfect square बन जाएगा. 2 prime number same right. This 6 can retain 2 into 3. ठीक है, 2 into 3 and into 7. अब कौन कौन सा नंबर आ गया perfect square? Square root 3 into 3, that is 3 square. 2 into 2, that is 2 square, and the rest all are distinct. So write 5 or into 7. 5 into 7. अब 3 स्क्वायर से क्या होगा? स्क्वायर से बाहर हो जाएंगे, that is 3. 2 स्क्वायर 2 बाहर हो जाएंगे, क्या बच गया? 5 into 7, that is 35. So this is equal to 6 root 35. This is the area of triangle ABD. Now find area of quadrilateral ABCD.
So area of quadrilateral ABCD is equal to, this can written area of triangle BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, दोनों को ऐड कर दिए, BCD प्लस ABD। एंड BCD एरिया पहले फाइंड कर चुके हो, एरिया BCD पहले फाइंड कर चुके हैं, कितना आ गया 30। एंड ABD एरिया कितना है 6√35। आप इसका वैल्यू निकाल लोगे, स्क्वायर रूट 35 फाइंड कर लोगे बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। फाइंड द स्क्वायर रूट, दिस इज मीटर स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 35, फाइंड कर लोगे स्क्वायर रूट और इसमें इंटू करके ऐड कर दोगे। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 2. Question number 2 is, find the area of quadrilateral ABCD. So draw figure quadrilateral ABCD. This is a quadrilateral ABCD. And length given AB 3, AB is 3, BC is 4, CD is 4, DA 5 and AC also 5. So all side given, find the area of quadrilateral ABCD। तो आप एरिया ABC फाइंड कर लोगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, फिर एरिया ACD भी फाइंड कर लेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ऑल साइड गिवन, और दोनों को ऐड कर दोगे, बन जाएगा सेकंड। ओके, नाउ थर्ड इज वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, सो डिस्कस आई नेक्स्ट डे। थर्ड नेक्स्ट डे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज लॉन्ग क्वेश्चन, सो आई डिस्कस नेक्स्ट डे। ओके।